Hello guys, I am Shubham from Tutorials. This video is a series of molecular biology PYQs जिसमें हम mRNA processing के PYQs डिस्कस करेंगे. Okay, so before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. The first question: eukaryotic mRNA are modified to possess a 5' cap structure. Right? Cap होता है. Which one of the following is an incorrect statement about the function of 5' cap structure? Okay, incorrect statement कौन सा है regarding capping process? Right? जो processing है इसमें capping, tailing and splicing आता है. So this is about capping process. It protects the mRNA from 5' to 3' exoribonuclease attack. Okay, this is correct statement. हमें incorrect देखना है. It facilitates splicing of the nascent transcript. Yes, so capping होने के बाद ही splicing हो सकता है. तो ये भी correct statement है. It protects the transcripts from degradation by RNase 3 family enzymes. This is incorrect statement. Okay, this is incorrect statement. Why so? Because जो RNase 3 enzyme है, RNase 3 इसमें एंडोराइबोन्यूक्लियस आता है. एंडो मीन्स व्हाट? सपोज दिस इज अ mRNA, ये अंदर से कट करेगा, राइट? किधर भी. तो कैपिंग इज एट दिस स्ट्रक्चर 5' एंड दिस इज 3'. 3' पे एडेनाइन टेल होता है. ओके, सो दिस कैपिंग कैन नॉट प्रिवेंट दिस एंडो न्यूक्लियस अटैक, राइट? तो RNase 3 में बेसिकली आर्गोनॉट है and dicer enzyme. Basically, these are endoribonuclease and capping 5' cap structure does not protect from that degradation. तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है it facilitates attachment to 40S subunit of ribosome. Yes, मतलब ये कैपिंग प्रोसेस होने के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, राइट? सो दिस विल अलाउ द mRNA to bind to राइबोसोम सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट. तो ये भी करेक्ट है. तो आंसर हमारा ऑप्शन 3 है इस क्वेश्चन का. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन: यूकैरियोटिक mRNAs have a enzymatic appended cap structure consisting of 7 methyl guanosine. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है. 7 methyl guanosine का स्ट्रक्चर होता है कैप, joined to the initial 5' nucleotide of the transcript. Okay, given below are few statements regarding capping. तो हमने ये सब प्रोसेस डिस्कस किया है. In the courses section you will see the molecular biology playlist. Okay, courses section में molecular biology playlist आपको मिल जाएंगी. फर्स्ट ए क्या है? कैपिंग protects the mRNA from degradation by 5' exoribonuclease. Okay, exo means बाहर से कट करेगा, राइट? फ्रॉम दिस साइड ओनली. तो इफ दिस इज कैपिंग दिस विल प्रोटेक्ट. ओके, अगेन इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है. तो ये तो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है. तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? एंड नेक्स्ट ऑप्शन: ड्यूरिंग कैपिंग द अल्फा फॉस्फेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द 5' एंड ऑफ द nascent mRNA. अल्फा फॉस्फेट इज रिलीज्ड, तो नो, इसमें अल्फा फॉस्फेट नहीं रिलीज होता ऑफ द nascent mRNA. See, this is a mRNA now. Okay, mRNA का 5' एंड, इस पे 3 ATPs होंगे. ओके, अल्फा, बीटा एंड गामा. दिस गामा विल बी रिलीज्ड. Okay, gamma will be released. Alpha, beta will be there as it is. Right? So, ये wrong statement है. तो B only जो next option है
ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर होगा। ओके ऐसे हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, राइट। तो ऑप्शन 2 बी ओनली हमारा आंसर है, इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, फॉस्फोराइलेशन मीडिएटेड conformational change, right? Conformational change means what? Structural change in C-terminus domain. Okay, carboxyl terminal domain में conformational change होता है of RNA polymerase 2 enables its binding with capping enzymes. Yes, ये भी करेक्ट है। तो C terminal domain है CTD, right? अल्फा CTD हम बोलते हैं। हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस फॉस्फोराइलेशन होता है, right? We know, so this is again correct statement. C correct है। During capping, a 5' triphosphate bond is formed between the beta phosphate of nascent mRNA, as I showed, this beta 1, and the alpha phosphate of GTP. Yes, तो ये भी करेक्ट है। तो जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है एंड दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an eukaryotic cell undergoing mRNA synthesis and processing was incubated with 32 phosphate labeled ATP. Okay, phosphate को label किया है with the label at beta position, very important, right? Beta position पर label किया है। Where do you think the radioactive isotope will appear in the mature mRNA? तो mature mRNA में ये आइसोटोप हमें कहाँ मिलेगा? Okay, this is question asking radioactive isotope where we will get in the mature mRNA. Mature mRNA means what? After processing, right? So let's see the options. 32 phosphate will not appear in the mature mRNA under any circumstances. No, incorrect statement है, because beta and gamma phosphates are released during transcription. नहीं हो सकता। Under any circumstances is an extreme statement और ऐसा नहीं होता, right? Next, phosphate groups of the phosphodiester backbone of the mRNA will be uniformly labeled as only gamma phosphates are released during transcription. See, phosphodiester backbone में क्या होता है? Phosphate beta gamma both are released during phosphodiester bond formation, right? Alpha retain होता है। Okay, so ये भी incorrect है। 32 phosphate will appear at the 5' end of the mRNA if only it has A as the first nucleotide. Yes, ये correct है। यहाँ पे हमने ATP यूज किया है एंड ये जो बीटा वाला फॉस्फेट है ये 5' कैपिंग में होगा, राइट? इन्वॉल्व 5' कैपिंग में इन्वॉल्व होता है एज वी सॉ इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो रिपीटेशन वी कैन सी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। So we will found this at the 5' end cap only if A is attached as the first nucleotide. Got it? Because यहाँ पे हमने ATP यूज किया है। Next option, no 32 phosphate will be appear in mature mRNA because the 5' terminal phosphate of an A residue will be further removed during the capping process. No, retain होता है बीटा वाला, alpha beta retain in cap and gamma 1 released in capping. Okay, next question. The 3' end of most eukaryotic mRNA is defined by the addition of poly A tail. Right, अभी यहाँ पे टेलिंग का स्टार्ट हो रहा है, तो poly A tail होता है at the 3' end. A processing reaction called
polyadenylation. Got it? The addition of poly A tail is carried out by the enzyme poly A polymerase, PAP, right? PAP, poly A polymerase. Given below are few statements about this process. Poly A polymerase is a template independent enzyme. This is correct. Okay, A is correct. A correct only in one option. See, option 3. Easy है solve करना. But let's see why other options are incorrect. Poly A polymerase catalyzes addition of AMP from DATP. Why DATP? This is case of mRNA ना. mRNA में deoxy ATP नहीं आता, तो ये wrong है. Poly A polymerase is a RNA template dependent enzyme. No. Poly A polymerase catalyzes the addition of ADP diphosphate from ATP to the 3' end of mRNA. No. ADP का addition नहीं होता. Poly A polymerase catalyzes the addition of AMP from ATP to the 3' end of mRNA. Yes. Right? ATP से AMP का addition होगा. And see, ATP, there are 3 phosphates. Okay. AMP will be added and PPI will be released out. Sorry, PPI, pyrophosphate, released out. Got it? Poly A polymerase catalyzes the addition of AMP from DADP. No, wrong है. Okay, so A and E are the correct statements. Which one of the following statements about eukaryotic RNA processing is incorrect? Incorrect देखना है again. Termination of transcription occurs co-transcriptionally at the polyadenylation site. Co-transcriptionally at the polyadenylation site. ये wrong है. मतलब co-transcriptionally means what? When the transcription is going on, right? जब transcription चल रहा है तभी termination होता है at the polyadenylation site. This is not the case, right? Termination का अलग process है. There are 2 pathways, torpedo and allosteric, right? So we have discussed this in detail. So this is incorrect statement. पहला ही incorrect है, तो यह आंसर होगा. Let's check other statements. Phosphorylation of serine 2 of the RNA called 2-CTD is required for recruitment of polyadenylation factors. ये correct है. Okay, ये correct है. Polyadenylation requires both cleavage at polyadenylation site and addition of poly A. ये भी correct है. Right? पहले cleavage होता है and then poly A's are added. Next, XRN2 is a nuclease that degrades the cleaved RNA to release RNA polymerase 2 from template. ये termination का है, तो ये भी correct है. Okay, so option 1 incorrect है and that will be our answer. Next question. A 1257 base pair genomic DNA sequence of a prokaryotic gene was cloned under strong constitutive promoter along with a suitable poly A signal, right? Used for development of transgenic tobacco plants. Molecular analysis revealed the presence of 3 types or lengths of transgene derived mRNAs: 555 base pair, 981 base pair and 1257 base pair in the leaves of transgenic plants. मतलब 3 different types of mRNAs हमें यहाँ पे मिले हैं. Okay, after molecular analysis under strong constitutive promoter. Okay, जिसमें suitable poly A signal was added. Got it? Now let's see why this happened.
मतलब क्या रीजन हो सकता है from the given options. See, what we have to see, which one of the following combination of the above statement would correctly explain the obtained results. क्या रीजन हो सकता है behind the three different mRNAs? So the following statements were proposed to explain the above results. A is three mRNAs represent alternatively spliced transcripts due to presence of putative intronic sequence in the gene. Yes, हो सकता है. Okay, three different types of mRNA can be a result of alternative splicing, right? So A can be seen. A अगर हो सकता है तो 2 and 4 नहीं हो सकता, right? Either A and C or A and B. Elimination करो. Okay, this is how you can solve quickly. Next is the gene sequence was characterized by presence of potential polyaddition signal that resulted in premature termination of transcription. हो सकता है, okay, हो सकता है. मतलब there will be different polyaddition signals because of which premature termination हुआ transcription का. So yes, this can be reason, right? Let's check other option. C, expression of full length transcript 1257 bases was lethal to the transform cell. अभी ये lethal है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में तो नहीं दिया है इसके रिगार्डिंग lethality के बारे में. How we can analyze that? There is nothing given in the question, and this is done on the basis of molecular analysis. तो lethal तो नहीं है, हमें मिला है 127 बेस पेयर का mRNA. तो दिस इज नॉट द आंसर. रीजन नहीं हो सकता ये, तो सी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है, ए एंड बी. लेट्स चेक डी ऑल्सो. द ट्रांसजेनिक प्लांट्स वर chimeric in nature and comprised of mix of transformed and untransformed cells. No, ये भी नहीं हो सकता. मतलब हमें जो डेटा दिया है इसमें इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है. हाउ वी कैन टेल दैट दिस इज lethal or this is transform and untransform cells, right? So A and B आंसर होगा. Next question. In order to ensure that only fully processed mature mRNAs are allowed to be exported to cytosol, right? जो mature mRNA है मतलब प्लेसिंग, कैपिंग, टेलिंग सब प्रोसेस प्रॉपरली हुए हैं, राइट? तो ही उसका एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल. Free mRNAs associated with snRNPs are retained in the nucleus. snRNPs is what? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, बेसिकली जो प्लेसिंग के लिए यूज होते हैं. U1, U2 एंड U4, U5, U6. ये है snRNPs, right? To demonstrate this, an experiment was performed where the gene coding a free mRNA with a single intron was mutated. Okay, अभी single intron को mutate किया है either at 5 prime or 3 prime split site or both the split sites. Given below are few possible outcomes. Okay, now see. I will just draw here. Okay, ये 5 prime split site है, 3 prime split site है. ओके, अभी एक एक्सपेरिमेंट में आइदर 5 प्राइम और 3 प्राइम इज म्यूटेटेड. इन अदर एक्सपेरिमेंट बोथ द साइट्स आर म्यूटेटेड, राइट? अभी क्या होगा इन द केस ऑफ बोथ द स्प्लिट साइट्स म्यूटेटेड?
राइट। दोनों स्प्लिस साइट्स पर अगर म्यूटेशन है तो SNRNPs बाइंड ही नहीं होंगे, ओके, बाइंड ही नहीं होंगे, और दैट mRNA विल बी एक्सपोर्टेड टू द साइटोसोल, राइट, उसका एक्सपोर्ट होगा। तो let's check the option. Pre-mRNA having mutation at both the split sites will be retained in the nucleus. No, right? Because दोनों साइट्स पर म्यूटेशन है तो ये बाइंड नहीं होंगे इन द केस ऑफ बोथ द स्प्लिट साइट्स, तो ये रॉन्ग होगा, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाउंड SNRNA. No. Next, pre-mRNAs having mutation at both the split site will be exported to cytosol. Yes. तो बी करेक्ट होगा, राइट, एक्सपोर्ट होगा बिकॉज SNRNP वहाँ पे बाउंड ही नहीं हो सकती बिकॉज उसमें म्यूटेशन है, राइट। सो बी के साथ सी है एंड बी के साथ डी है, 2 and 4 एलिमिनेट, करेक्ट कॉम्बिनेशन ही चूज करना है, गॉट इट। नेक्स्ट, pre-mRNA mutated at either 3' or 5' split site will be retained in the nucleus because of presence of bound SNRNPs. ओके, अभी सपोज 3' स्प्लिट साइट म्यूटेटेड है एंड ये वाला 5' करेक्ट है, तो यहाँ पे SNRNP आके बाइंड करेगा, वी नो U1 वाला ऐड होता है यहाँ पे, राइट, U1, तो ये 5' पर बाउंड रहेगा एंड इसका स्प्लिसिंग नहीं होगा प्रॉपरली, राइट, सो ये रिटेन होगा इन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दिस बाउंड SNRNP, राइट। 3' साइट पर म्यूटेटेड है तो यहाँ पे बाउंड नहीं हो सकता एंड यहाँ पे बाउंड रहेगा बिकॉज स्प्लिसिंग विल बी नॉट कंप्लीटेड, so this will be retained in the nucleus. So option C is correct again. Pre-mRNA mutated at either 3' or 5' split site will be retained, मतलब न्यूक्लियस में रिटेन होगा because of the presence of bound SNRNPs. So option 1 correct है, B and C, and option 3 will be wrong. Okay, D option में just opposite दिया है, will be exported to the cytosol because of absence of bound, presence होगा, bound होगा, we saw here. Next question, which one of the following statement about mRNA export from the nucleus is incorrect? Incorrect statement again, cellular pre-mRNAs with introns are generally not exported out of the nucleus. करेक्ट है ये स्टेटमेंट, मीन्स इंट्रॉन्स अगर है तो उसका एक्सपोर्ट नहीं होता, राइट ना, दिस इज करेक्ट। DBP5 is an RNA helicase that releases mRNA from the transport complex. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने देखा है mRNA ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है DBP5. Okay, I will attach the videos related in the I button. If you don't know this statement, hold पर रखो, you will see how to solve this. Next is ATP hydrolysis is required for mRNA transport across the nuclear pore complex. ये करेक्ट है, see mRNA ट्रांसपोर्ट को ATP की जरूरत है, ATP hydrolysis. Why? There is logical reason. तो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ओके, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, इनको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो एनर्जी लगेगी, तो एटीपी इज एनर्जी मॉलिक्यूल, ओके, सो जरूरत है एटीपी की। नेक्स्ट, फिनाइलएलानाइन ग्लाइसिन प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आर नॉट इन्वॉल्व, सी ये इनकरेक्ट है, राइट, नॉट इन्वॉल्व इन mRNA एक्सपोर्ट। हमने देखा है जो ये FC रिपीट्स बेसिकली हम बोलते हैं फिनाइलएलानाइन ग्लाइसिन रिपीट्स को,
These are important for transport, right? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो mRNA में भी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इट इज अ हैवी मॉलिक्यूल. तो ये इनकरेक्ट होगा एंड दिस विल बी द आंसर बिकॉज वी हैव टू सी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. एंड अगर इसमें डाउट है एंड इसमें अगर कंफर्मेशन है तो ये कंफर्म गलत होगा एंड ये कंफर्म सही होगा. Got it? Next is an intron in a yeast reporter gene carries a mutation in the place site branch point. Okay, branch point mutation है. Sequence भी दिया है यहाँ पे. Okay, जहाँ पर mutation है. But this is not required. I will tell you how you can solve this quickly. To suppress the mutation, a library of point mutants of snRNA was introduced into the mutant stem. The suppressor is most likely to have a point mutation in. Okay, see अभी ये टफ लग सकता है क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन गिवन एंड ऑल दिस थिंग्स. सप्रेसर भी है, राइट? snRNA को म्यूटेट किया है, तो बेसिकली इसका इजी है आंसर. ब्रांच पॉइंट दिया है, ब्रांच पॉइंट. ओके, ब्रांच पॉइंट पे पहले तो ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन होता है अटैच, राइट? एंड देन U2 जो हमारा snRNP है, U2 यहाँ पे अटैच होता है ऑन द ब्रांच पॉइंट. तो इसका आंसर होगा U2 snRNA, ऑप्शन 2. गॉट इट? सी यहाँ पे मैंने ये अटैच भी किया है, यहाँ पे सीक्वेंस भी दिया है. कैन सी हियर दिस वन UAC AAC. गॉट इट? अगर ये कंप्लीट है तो BP बाइंडिंग है, बाइंडिंग प्रोटीन. एंड व्हेन दिस इज देयर तो यहाँ पे U2 बाइंड है. गॉट इट? तो this slide you can make a screenshot and save, बहुत important है. Next question, which one of the snRNAs given below base pairs with 5' split site of pre-mRNA? okay, 5' split site पर base pairing किसकी होगी? U1, option 1 U1, right? here 5' split site है, U1 अटैच होता है. got it? So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.